फ्रेंड्स, आज हम डिसीजन साइंस ईयर 2022-23 शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज गिवन 10, x is given, that is summation of x is given 120 and summation of x square is given 1530, find the coefficient of variance. So यहाँ पे पहले डाटा लिख लेते हैं। n is given 10, this one is summation of x, this is summation of x square. So summation of x is given 120 and summation of x square is given 1530. So पहले लिख लेते हैं यहाँ पे फॉर्मूला स्टैंडर्ड डेविएशन का, that is summation of x square divided by n minus summation of x divided by n whole square root. So यहाँ पे लिखेंगे समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर 1530 डिवाइड बाई 10 और ये हो गया 120 डिवाइड बाई 10 होल स्क्वायर। सो उसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा 153, this one is 144 square root, that equals to square root of 9 equals to 3. उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, मीन कैलकुलेट करेंगे, that is summation of x divided by n, that means summation of x is 120 divided by 10, that is 12. सो यहाँ पे हमको कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैलकुलेट करना है। सो द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस इक्वल्स टू स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय एक्स बार इंटू 100। सो स्टैंडर्ड डेविएशन है 3, ये हो गया 12 इंटू 100, that equals to 1 by 4 into 100, that equals to 25. So ये हो गया हमारा आंसर फॉर कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। नेक्स्ट हम लोग 1b सॉल्व करेंगे, कैलकुलेट द मीन डेविएशन एंड क्वार्टाइल डेविएशन इफ द स्टैंडर्ड डेविएशन इज गिवन 60। सो आइए इसको सॉल्व करते हैं। सो गिवन स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल्स टू 60। सो यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे 4 स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल्स टू 5 मीन डेविएशन। सो इट इज गिवन 4 इंटू 60 इक्वल्स टू 5 मीन डेविएशन, दैट मीन डेविएशन इक्वल्स टू 240 डिवाइड बाई 5, दैट इक्वल्स टू 48। सिमिलरली हमको क्वार्टाइल डेविएशन कैलकुलेट करना है। So the formula for quartile deviation or QD equals to 2 by 3 into standard deviation. So 2 by 3 into 60, that equals to 40. So ये हो गया हमारा आंसर फॉर मेन डेविएशन एंड फॉर क्वार्टाइल डेविएशन। क्वेश्चन नंबर C, if the observation is 3, 9, 27, 81 occurs with the frequency of 4, 3, 2 and 1 respectively, find their geometric means. सो पहले हम लोग यहाँ पे ऑब्जर्वेशन लिख लेंगे। एंड द रेस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी। सो यहाँ पे 3 का ये 4 है, देन 9 का 3, देन 27 2 है और लास्ट 81 का 1 है। सो द फॉर्मूला फॉर ज्योमेट्रिक मीन इक्वल्स टू 10 स्क्वायर रूट ऑफ, that is 3 each appear 4 times, you can write like this, 3 into 3 into 3 into 3, 9 appears 3 times, 9 into 9 into 9, 27 appears 2 times, 27 into 27,
and 81 appears one time into 81. So next कैलकुलेट करेंगे. तो उसको हम लोग इस तरह लिखेंगे 3 to the power 4 1 2 3 4 and this one is 3 to the power 3 square again 3 square again 3 square. So ये हो जाएगा आपका 3 into 3 cube 3 into 3 cube and this is 3 to the power 4. So अगर इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे ये हो जाएगा 3 to the power 20 by 1 by 10. So that is 3 to the power square, that means 3 into 3 equals to 9. So ये हो गया हमारा आंसर फॉर द ज्योमेट्रिक मीन. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय अनबैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम एंड हाउ टू बैलेंस इट. सो इस क्वेश्चन को कैसे लिखना है. अनबैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम इज डिफाइंड एज ए सिचुएशन इन विच सप्लाईज एंड डिमांड्स आर नॉट इक्वल्स. सो इसमें क्या होगा, एक डमी रॉ एंड डमी कॉलम इज एडेड टू दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स डिपेंडिंग अपॉन द नेसेसिटी टू मेक इट ए बैलेंस प्रॉब्लम. लास्ट पॉइंट, दिस प्रॉब्लम कैन बी एड्रेस इन द सेम वे एज ए बैलेंस प्रॉब्लम्स. सो ऐसे ही पॉइंट आपको लिखना है. राइट द मैथमेटिकल मॉडल ऑफ असाइनमेंट प्रॉब्लम्स. सो इसको कैसे लिखेंगे हम लोग. लेट एक्स आई जे इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एम्प्लॉइज and I stand for 1 2 3 and assign to tasks that is j and j equals to 1 2 3. Similarly, the objective function is minimize the cost or the time required to accomplish the tasks. So that means the objective function z equals to summation of cij into xij. So where xij equals to 1 if employee is I assigned to the task j, otherwise और 0 अदरवाइज. सो रेस्पेक्टिव टू द ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमको यहाँ पे सब्जेक्ट टू कांस्टेंट लिखना है. सो कांस्टेंट इज समेशन ऑफ एक्स आई जे इक्वल्स टू 1 एंड आई इक्वल्स टू 1 2 3 अप टू n. ओनली वन जॉब इज डन बाय आई पर्सन एंड नेक्स्ट कांस्टेंट है दैट इज समेशन ऑफ एक्स आई जे इक्वल्स टू 1 जे इक्वल्स टू 1 2 3 अप टू n. ओनली वन पर्सन शुड बी असाइंड टू द जे जॉब. सो ये हो गया हमारा असाइन और द मैथमेटिकल प्रॉब्लम ऑफ असाइनमेंट प्रॉब्लम्स. नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 1F. फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन ऑफ 5 पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज फाउंड टू बी 0.8. इज इट सिग्निफिकेंस. सो सिग्निफिकेंट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले यहाँ पे लिख लेते हैं फॉर्मूला फॉर सिग्निफिकेंस टू आइडेंटिफाई द प्रोबेबल एरर of r equals to 0.6745 into 1 minus r square divided by square of n. So r is given 0.8 and n is given 5. So आइए इसको सॉल्व करते हैं. So 0.6745 into 1 minus 0.8 square divided by स्क्वायर रूट ऑफ 5. सो उसको सॉल्व करेंगे 0.6745 इंटू 0.36 डिवाइड बाय 2.236. सो ये हो जाएगा हमारा 0.108. सो उसके बाद हम लिखेंगे दैट इज एज पर द नोटेशंस हमको ये याद रखना है r इज ग्रेटर देन, that is greater than 6 PER. That means it is significant. Or R is less than 6 PER, it is not significant. तो ये जो PER का वैल्यू उसके साथ हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज 6 probable error of coefficient equals to your that is 865. So hence 8 is greater than 6 PER. That means your correlation or coefficient of correlation is significant.
सो यहाँ पे लिख लेते हैं द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज सिग्निफिकेंट। ये हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 जी, राइट एनी टू प्रॉपर्टीज ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट। सो पहला पॉइंट लिखना है कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन सार स्क्वायर इक्वल्स टू बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई। सेकेंड पॉइंट है इफ वन रिग्रेशन कोफिशिएंट इज ग्रेटर देन 1 द अदर इज लेस देन 1 बिकॉज आर स्क्वायर लाइज बिटवीन 0 to 1। थर्ड प्रॉपर्टीज हो गया बोथ रिग्रेशन कोफिशिएंट मस्ट हैव द सेम साइन which is also the sign of the correlation coefficient of R. The next is the regression lines intersect at the mean of x and y. और last point है each regression coefficient gives the slope of respective regression lines. So ये जो पांचों पॉइंट है ये आपका प्रॉपर्टीज हो गया रिग्रेशन कोफिशिएंट का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1H, what are the basic component of your Q systems? So the basic component of Q systems basically includes the first one is arrival process, the next is service disciplines, service time durations, customer populations, waiting positions and number of servers. So for example, student at a typical computer terminals rooms with a number of terminals, if all terminals are busy, the arriving students wait in the queues. So आप लोग यहाँ पे देखोगे कस्टमर पॉपुलेशन है, अराइवल प्रोसेस है, स्टूडेंट्स आर स्टैंडिंग इन द क्यूज, द नंबर ऑफ सर्वर्स एंड ईच नंबर ऑफ सर्वर असाइन वन नंबर ऑफ दैट इज स्टूडेंट्स। सो दिस इज द बेसिक कंपोनेंट ऑफ योर क्यू सिस्टम और वेटिंग लाइन सिस्टम्स। क्वेश्चन नंबर 1I, ए टेक्स्ट फाइलिंग काउंटर्स टेक 4 minutes to process a files. Customer arrives at a rate of 12 per hours and determine the average length of waiting lines. So यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे arrivals rate. So arrival rate equals to 12 customers per hour, that is denoted as lambda, and service rate equals to, that is given 4 minutes पर कस्टमर। सो उसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे आवर में, दैट इज 15 कस्टमर पर आवर। सो देन हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे एवरेज लेंथ ऑफ वेटिंग लाइन्स। ले लेंगे एवरेज लेंथ ऑफ द वेटिंग लाइन, that is LQ equals to lambda square divided by mu into mu minus lambda. So ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर डिवाइड बाय 15 into 15 minus 12. So that equals to 144 divided by 45, that equals to 3.2 or approximately 3 कस्टमर पर आवर। सो ये हो गया आंसर हमारा एवरेज लेंथ ऑफ वेटिंग लाइन। क्वेश्चन नंबर 1J, राइट द कैंडेला नोटेशन इन क्यू मॉडल्स। सो कैंडेला नोटेशन होता है दैट इज कैपिटल A स्लैश कैपिटल B स्लैश स्मॉल c स्लैश K स्लैश M स्लैश कैपिटल Z। एंड व्हाट आर द नोटेशंस ऑफ और दैट इज A स्टैंड फॉर अराइवल probability distribution, B stand for service probability distributions, C stand for number of servers, K stand for maximum queue size, M stand for customer populations and Z stand for queue disciplines. So ये हो गया आंसर हमारा कैंडल नोटेशन इन क्यू मॉडल्स। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियोस, काइंडली लाइक, शेयर and subscribe these channels. Thank you.